Right, so we are solving this paper of October, November 24, paper 2 this time. We did solve another variant, and there can be questions similar to that also, but there are different questions as well. So let's start. Yes, try and answer the question. Respond quickly so that you can, it would give me an idea where you stand. Yeah. C. Answer C, you're right. It says a solution to a problem may be represented using pseudocode or flowchart. Either you write English and programming mix in the pseudocode, or you can draw the flowchart, or you can draw this structure diagram. This way you can, give a sketch that how are you going to solve your problems, right? So you were right. Bingo. Moving to the next question. Take one box to complete this sentence. A pseudocode example of selection. Selection may there can be two things. Either you have if command or you have the case commands. So you can check where do you see any of these. Yeah. C. Part C, you're right. So where this quiet, not saying anything. Yeah. This particular symbol is used for what? Subroutine. Very good. This one is for start and a stop. Start and a stop. Start and a stop. 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 Terminator is a stop thing. Either you say terminator or you can say stop or end. It's the same thing. It is just the change of English only. And then moving to the next symbol. Yeah. Decision. Decision, you're right. And then this one is for the process. Uh, Here you need to make a note, Urva. I gave you all the solved past papers. In that, this was taking you to subroutine, which was wrong, right? So it was a typo error, meaning the person who I made the responsible to solve this paper to type it for me, he made a mistake that there was a typing problem. So this symbol is for the process. Okay. Okay. So, right, moving to the next one. Yeah. An algorithm needs to total the 50 numbers between 1 and 100 inclusive. So that means altogether you got to enter 50 numbers and all the number have to be in between 1 to 100 only. How are you going to do that? So when you're drawing the flowcharts, you can say start. Drawing might be not that good because drawing it using mouse. And then we're going to make a process box here. Why? Because there are two things. Examiner says use a count control loop. So we need to start the loop. So you have to, use a variable that can be count, that can be index, that would begin from initially would begin from 1, will go till 50. And then examiner says one more thing here, somewhere there, it says total. So whenever in your flowchart there is total or average calculations are there, so it's better to start them with 0. You're going to start them with 0. So there should be two different process blocks. And then you can write in it, this will be what? This can be called count. And this count should begin from 1 and the total should be 0. After that, examiner says use appropriate prompt. For this, we can use a kind of paragram here. And then inside that, we can say
A proper prompt needed. You can write that there. Output, I should say output, something like enter number between enter number between 1 to 100. And after that, there should be another input box. Don't forget to make these arrows. Sir, in the paper, can we write like short forms like oh between you just written B/W? You'll be, writing it with the pen. I won't suggest that you use these kind of shortcut methods. I'm saving my time, right? Okay. Input the number. Why? Because examiner says it should ask you for the number between 1 and 100. So we prompt it first and then we're taking input. And after the input, examiner says you need to calculate the total. So there should be a box here. You can say total arrow total plus number. I made a mistake there. And like I said before, don't forget to draw the arrows. सर पहले वो डिसीजन का कुछ आएगा कि इफ बिल्कुल नंबर आएगा, इज बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नंबर अब नंबर को जो है उसने हमें कहा नहीं है, उसने हमें सिर्फ ये चेक करने को नहीं बोला, उसने कहा अप्रोप्रिएट मैसेज दो और नंबर इनपुट दो और हमने उसको प्रॉम्प्ट करा दिया 1 to 100। अगर हमसे कहता कि चेक लगाओ तो फिर हम इसको लूप लगा के वापस यहाँ पे एक कंडीशन बॉक्स लगाते इस जगह पर, इस जगह पर कंडीशन बॉक्स लगाते और कंडीशन बॉक्स लगा के फिर वापस इसको ऊपर भेजते इनपुट करने के लिए। यानी इनपुट के बाद कंडीशन बॉक्स यहाँ आता है, इनपुट करने के बाद इधर लगाते कंडीशन, इफ द नंबर इज लेस देन 0 और द नंबर इज मोर देन 100 तो इट शुड गो बैक। तो फिर हम इसको वापस ऊपर भेजते अगर वो नहीं होता तो। लेकिन अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है वैलिडेट करने की तो मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। टोटल हो गया, टोटल करने के बाद अब हमें एक नंबर टोटल हम कर चुके हैं तो हमें लूप को आगे बढ़ाना है, काउंटर आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें काउंट को आगे ले जाना पड़ेगा। So we can say count arrow count plus 1, and then we can use the condition symbol there to check if the count is more than 50 or not. So if you have a space, you can keep drawing it in a vertical way. Otherwise, you can take a right turn and you can, make the rest of the flow chart there to save the space. Otherwise, if you have enough space, so you can keep drawing it like that. Is count, then you can write is count more than 50. Is the count more than 50? Yes or no? We say yes, the count is more than 50. In case of yes, we're going to come down. And in case of no, you're going to go where? You should go back to take the next number entry. It should come back to this point. Otherwise, it should produce a message to produce output.
And then we can say output, the total is, put a comma, and total was stored in the variable total. And then your program should stop after that. So there you go. That's how you're going to make the flow chart. And moving forward to the next question now. Well, this type of question can be a bit difficult to detect where the problems are. So examiner is following a one-dimensional array, solving a what? Making a program for bubble sorting using 1D array. So program is to do bubble sort in alphabetical order using 1D array. The array name is item list. Item list. So go to identify the errors where the errors are. Yes, my dear. So a counter can't be string. Counter can't be a string. How did you detect that? Because you see here counter plus one, some calculations are being done here. So that means variable in which you are doing some increment, decrement should not be a string. So you are right there. So this has to be integer. So how would you answer this? Would you specify the line number where the error is? So line number 02. Correction. So you can copy this correct line there. You can say declare counter colon integer. Yeah. Moving to the next part, the next problem. Temperature can't be string because on in line 9 it's written temperature equals to true. Temperature cannot be what? String because on line 9 it's written temperature equals to true. So it has to be what? Oh, It has to be what? 0? Yeah, look at this. Here it says temperature is a string. And wherever in your program temperature has been used, check where the temperature was used. Temperature has been used here. What are we doing here? We are picking up the values from the array, transferring it into temp. And this was the array of what? This was the array of alphabetical. It was sorting item list in alphabetical order. That means you had items here, and item is always a string. So there was no problem there. But yeah, you're right here. This particular line, if it is a string, so this true should have been written in what? Should have been written in quotation mark. But instead of this could have been made blank, empty, because true wasn't a good idea to transfer that, right? There can Can, be how many errors are there? It says 5 errors. So sometimes there can be 6 errors or 7 errors. So good pick of yours. Yeah. What do you suggest in this case? can we write that line 9 shouldn't be there? Line number 9 shouldn't be what? Shouldn't be there. Shouldn't be typed. So yeah, this is also possible that you can, just get rid of that line. This line is not needed, or maybe you can just make it blank. Or even if the examiner is writing true, that true has to be enclosed in quotation mark. Okay. Okay. Aage let's move forward. Pick up the other error. But actually, this wasn't the error. This wasn't the error. This wasn't the error. Think about where do we need true in this program. Where do we need true or false? We need true here. We need false here. We are moving this true and false where? In the variable
in the Swap. variable swapped. So instead of temp here, this should have been line number 9 should have been written differently. Yeah, tell me how. Line number 9. Swap equals to true. There you go. You picked it up now. Swapped uh, arrow and true. Correct. Moving forward to next error. What is the next error? The next error is on this line. Chalo, I'll give you some hint. Next error is on this line. Should it be These greater than pass is greater than or no equal no to? no no no. These two conditions should be true at the same time. Both conditions should meet. It should be and instead of or. Yes, that was a problem. That was a problem. So you can mention the line number 10 and then you can write down this end correction here. So you can write with end. Write that full line here with end. Yeah. Whereas do you see a problem? One more problem that you have to pick up. Yeah. You picked up a problem here. You picked up a problem here. You picked up a problem here. And In two more 17, line 17 should be item list counter plus 1 equals to temp. counter plus 1 equals to temp. You're right. So this should have been counter plus 1 arrow temp like that. So you can say line number 17 and then you can write this item list counter plus 1. You're right. And what else? There. Line 19 has end case And case should there is no case command, so there's if command. So there should have been what? And if not end case. Right? So there should be and if not end case. So brilliant. So these are the type of error that you are supposed to write. Examiner has written all in bold letters. Line number 2, this was the correction you suggested. Integer. Line number 9, this should have been swap. Line number 10, this should have been end. Line number 17, this should have been counter plus 1. And then line number 19 should have been end if. How do you answer that? You were supposed to answer in this form, that you mention the line number and then you advise the correct method of writing it like this way. This was wrong method and this was the right method. This was wrong method, this was wrong method, this was right method, this was wrong method and right method, wrong method and right method. The examiner is doing both. Mentioning the line number, examiner says, yeah, it is accepted. This means or either you write down the line number or you write down the full mistake that is there, complete line. So I think this will be, time saving when you write down the line number. Okay. I hope you Okay. understood. Moving to the next part, a bubble sort algorithm can be written to include features that make it more efficient. Explain why the corrected bubble sort algorithm is more efficient. I covered it in Let's see. detail. I covered it in detail in my video last time, and this was the link for the video. I kept it here, so I'll show you that also. So whoever will be watching this video later on, they can go into my YouTube channel and they can, play this video bubble sorting, bubble sorting. In this, I'm explaining it in detail, everything about bubble. And then I'm discussing it in detail that how would you write a non-efficient pseudocode and efficient pseudocode. So in efficient pseudocode, we discuss a flag variable. We use a flag variable. We're making it
false. Every time you were swapping the number, it was changing to false, and that tells the program that, or tells the computer that swapping has been done. That means there's still sorting required. Numbers are not sorted yet, and this way loop can be continued. And to stop the loop, it has been sorted. So whenever the data is completely sorted, then only it's going to come out. And how the program was made efficient, that if you give it sorted data, so after a single pass, it should not continue, it should come out. So it should save time. To reduce the number of comparison, I meant to say less number of iterations required. Why? Because your program will be efficient enough. So your program would detect, आपका program मालूम कर लेगा कि numbers already sorted है या नहीं है. उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये वाला वीडियो चेक कर लेंगे, और इस वाले वीडियो में पूरा जो है वो सॉर्टिंग पे सारा explanation given है. And I'll send it to this chat box. I'll send it to your class group with bubble sorting. You can always refer to that. Coming back to this, analysis is one stage. State one other stage in the program development. What are the other stages that you have studied? Design, coding, and testing. Design, coding, and testing. So you can write any of them. And describe the analysis stages. What do you do at the stage of analysis? So yeah, Breakdown. remember, break down the problem. So that is called decomposition. Or you can say break down the problem into parts. Break down the problems. Break down the problem into smaller modules or tasks. And abstraction. What was that? Remove all unnecessary. Remove all unnecessary things. Keep essential things needed to solve the problem. सिर्फ वो डेटा डिस्कस करें जो हमें करना है सॉल्व. उसके बाद one should identify, yeah, what is that? Identification of the problem Identification of problem, or the requirements. identification of problems, and then identification of the requirement. Identification of the requirements. We can further discuss what possible solutions. At this stage, we make a feasibility report. But examiner like to see these things. Give priority to first form when it comes to analysis. Examiner like to see these four things. Okay. What it says here. Example of, oh yeah, this is another thing. Example of data collection research. Data collection, what is that? If I'm making a software for Urva's company, so I need to collect all the data, and for that, interviews are conducted. Research is required. Research is done. Questionnaire through different techniques. How the research is done, what can be done for that? So you can collect data,
by doing some research, and for that you can conduct interviews, or you can distribute questionnaire, or you can do observation by visiting that organization. You can go there, observe things yourself, and you can collect sample documents from them. If you're making a software for your school, so you can collect admission form, and then you can convert that into an electronic app admission form. You can make a website for that by looking at that whole form. You can design similar website with the same option, so that one can enter or fill in details for the admission. So I hope you've got that. Outline one type of verification check that could be used when inputting data. So it's not about send verification while sending data. It says verification while entering data. Double entry check. Double entry check. Double entry check. And what was that? Enter one data twice. Enter data twice to ensure that the data is matching with the original data, to ensure that the data is correct, or to ensure that the data is matching with the original data. Or there can be another check for visual check, looking at the data, looking at the data and match it. What it says here, it says looking at the data that has been entered, either confirming it is correct or showing errors. Double entry check, data entered twice to ensure that two sets of data, older one, new one, when you set the password, change the password, so to it prompts you to enter old password, then you enter new password, and then it prompts you again to re-enter the password or verify password. So you enter new password twice. So why twice? So that both the password can be compared and matching is done, and this way that password can be accepted. After that, it says, yeah, you got this pseudocode, and these are the numbers to be used to fill this table. What are we doing in this? Let's see. So I've already captured this pseudocode here. These are the variables being used. So count, answer, and values. So count, answer, and value. And there is another needed for output. We are starting up with this repeat. That means the door is open and you would go inside the loop. Why? Because there's no condition. The post condition loop, where the condition would come in the end, not now. So you directly enter the loop. When you enter the loop, the first thing is what? It says input value. That means you take this first value of 5 and you give it to the variable value. So that's what is being done here. Then it says, is the value not equals to -1? Yeah, this value is 5 is not equals to -1. This condition is correct. If this condition is correct, that means this if part will run. So it says move this value to answer. So value was 5, move it to answer. So answer will have the same number. And then it says for count, a loop will begin from this point, and that loop will start from where? Value. Value was 5. 5 minus 1. So that means it would start from 4. So 4 to 1. That is why, and step -1 is going in downward direction, 4 to 1. So 4, 3, 2, 1. So every time loop will run, it will do what? It will do answer into answer multiply by count. So it will be multiplying the first answer. The first answer is to be multiplied by the count. So that means this diagonal multiplication, 5 4 the
20. And then this answer is to be multiplied by this. 23 by 20 multiplied by 3 gives you 60, and then 60 multiplied by 2 will give you 120, and then 120 multiplied by 1 will give you 120. Once this calculation is done, then it says output answer. So the final answer is going to be 120. So that 120 is to be produced. यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? Yes, but sir, how do we know when to change the line? Like after you written value 5 and answer 5, you change the line for count. See, when the loop will begin, you change the line. Answer was equivalent to 4, and then you carry on the same line. When you run this if command, well, when you run this if command, examiner is taking input and then changing the line here. When you go inside this if command, or when you go inside the for loop, examiner never check whether you have written the data with the proper gaps in between or not. But what are we hunting for when we are checking your copies? We need to see whether you are writing down the number in the same column and you have shown the same changes in the values or not. Got it? Yes. So 120 output aa gaya tha. This output came, and then what will happen? Then it says next count. Next count meaning sorry, output आ गया था, and then endif will set it back यहाँ पर क्योंकि endif था. Endif जब आया तो यहाँ पर है until value is equals to -1. तो value कितनी है? Value हमारे पास है, what is the value? Value is 5. तो value हमारे पास -1 नहीं है अभी. Value is not -1. So this until will send it back. Until इसको दोबारा ऊपर भेजेगा. फिर आप कह रहे हैं इनपुट वैल्यू, फिर आपने वैल्यू फिर से इनपुट करना है. So again you take a new number from here 6 because list is provided. So every time input is done, so you pick up the number from this list. So you're taking this number 6 from here. So 6 आपने इनपुट किया, तो ये चेक करेगा वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू -1. So 6 -1 नहीं है, so that means condition is correct. Condition correct है, वापस अंदर आएगा. वैल्यू जो थी 6 को कॉपी करेगा आंसर में. So that is what has been done here. And then it says loop chalao value yani 6 minus 1. 6 minus 1 meaning 5 to 1. Step -1. So your 5 to 1 loop chalega. And every time this will be doing what? Multiplying answer into count. The value of answer is to be multiplied by the count. So 30 5's what is that? 35's 120, and then 123 is 360, and then 362 the 720, and 721 the 720, like that. 34's are 120. It was diagonal multiplication. 34's are 120, 123 is 360, and then 360, like that. Once you reach to the end of this loop, it says produce output of answer. So answer final value was 720. You're producing it here, and then it's endif ho jayega. So endif will send it to this line. Yeah, would compare what is the value. Value is 6. The value is not -1, so it's going to go back. वापस आएगा, and then it says input value. So this time you're entering the number -1. तो यहाँ पर -1 आ जाएगा. उसके बाद ये चेक करेगा. Value is not equals to -1. Yeah, value is equivalent to -1 because we entered that -1 here. So that means this condition is wrong now, not matching. So it's going to come out. This if command will not run. Value, it will find this value is equivalent to -1. It will come out, the loop will stop. The second part of this question can be a bit difficult. And what is that? State the purpose of this algorithm. What is the purpose of this algorithm? What do you understand? So it was, you can say every time the loop will run, the count is decremented in the reverse order. So count will start from the value -1, and every time the loop will run, it will be decremented. And within the loop, the value of answer is to be multiplied by the count. Now it's your English how you write it down. Let's say what examiner says about this.
examiner will talk about permutation. Permutation is the possible answers, possible numbers. So multiply input number by one less than itself. So that's what we were doing. If the number was 5, so we started multiplying it by 4, 3, 2, 1, like that. So one less to that. It calculates the number of permutation. What is permutation? Permutation is the different arrangement or order. So as the number was going down, decremented, going in the reverse order, so that's called permutation. So it calculates the number of permutations and was multiplying the number by the input value. So this is what it was doing. So 6 5 is 30 and then 34 is 120, like that. Diagonal multiplication was done there. Coming back to the third part, describe, this is another tricky question. Describe the problem that would be caused in this algorithm if a value is 1, 0, or less than 1 is entered. 1, 0, or less than 1 is entered. But they'll be entered in the if loop. They would still enter the if loop. This value, if you enter 1, for example, or 0, if you enter, suppose, a number -2, a value that is less than 1, -2, suppose. So that means this value, this will be keep on decreasing it. So -2 will become -3, and then will become -4, and then will become -5. So it will never become -1. So that means loop is going to be keep on running, will never end. And that's what examiner says here. The program would accept the value and enter the for loop. So whatever negative number you enter, it would accept that and enter the for loop, and then will do what? The count would be reducing further down and would never reach to 1. And this program is going to be kept on running. So it would be an endless loop. Coming to the next question. It says different type of test data are used during program development. जब आप develop करते हैं software तो आपको test करना होता है. So you enter different type of data to test your program to make sure that program works as intended. तो जैसा आपने सोचा था ऐसे काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर a program being developed task as input the whole numbers that are not registered than 80. तो आपको input करना है whole number that are not greater than 80. So identify 2 items of test data to test the whole number limit 80. तो आप इसमें नॉर्मल डेटा टेस्ट कर सकते हैं, एबनॉर्मल डेटा टेस्ट कर सकते हैं. तो टेस्ट डेटा पहला क्या होगा? पहला आपने टेस्ट डेटा किया कि होल नंबर जो 30 है विद इन द लिमिट है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डेटा है. रीजन फॉर द चॉइस इज नॉर्मल डेटा, एंड नॉर्मल डेटा meaning it should be accepted by the system. I'm just writing a tick sign there. You can write full English there. And what if you enter a number, say, above 80, like, for example, 101? So as the limit was 80 and you are entering a number more than that, so that means this will be treated as abnormal data, should be rejected by the system. That's what examiner is doing here. Limit is 80, so testing 80 and 81. The largest boundary, smallest whole number, or number that would be rejected, number that will be accepted maximum. The choice is yours. What numbers you are testing? There can be alternate answers, different answers. But normal and abnormal numbers are always suggested. If I have picked up 30, you can pick up 40, you can pick up 50, you can pick up 70 number will still be accepted. You can pick up 80 number will still be accepted. Why? Because it says limit of 80. I've written 101, number is going to be rejected. Why? Because the limit was 80. Or maybe you have picked up, say, 90, still be rejected. 1000 still be rejected. So there can be all different answers. But, it should fulfill the requirement of normal data and abnormal data. Moving to the next question. Not P or Q. How will you make this kind of not P or? So that means draw this OR gate, a line of P coming with a NOT gate, and connection must be there with a Q.
After that, Q, XOR, R. Now you make the diagram for XOR gate. Q, XOR, R. And then these two should have NAND in between. It should be a NAND gate like that. So you can complete it. Got it? Yes. Oh, now what? Now we need to draw the trace table for this? Yeah, the trace table is already filled. Started up where P, Q, R, and zeros are there in the beginning. Sometimes examiner may start with ones, so starting it with zeros. P, Q, and R, and this was the equation. Zero, one, zero, 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 one, and one. On these eight, zero, zero, one, 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 and one. And then there should be four zeros and four eight. How are you going to do that? Yes, First, do not P. first is the not P. So one, zero, 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 zero. Opposite values of P have to be written in this column. Have I done Then it not correct? Q. Yeah. And then OR with Q, the first OR gate. So that means the not and Q should be added up. Q plus not P. Check, 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 check. One and one. What are we hunting for? Zero plus one is one. Zero plus one is one. One plus one is one. One plus one is one. Zero plus zero. Zero plus zero. One plus zero. And one plus zero. Got it? Correct? Yes. And then what? Q XOR R. Just write XOR there. Q and R. Q and R. If they are different, write one. So these two are different. You're going to write one. These two are different. You're going to write one. These two are different. You're going to write one. Then these two are different. You're going to write one. And then the rest of them are zeros. Check. Is this correct? Yes. And then we need to calculate the NAND. And how are you going to do that? Which of The the columns are to be multiplied? Or, opposite and 1 will equal to 0. The rest will be 1. or and or are these two columns that we are looking at? Yes. Okay. So these are the two columns that you are looking at. Focus on this. And then write, multiply and write opposite answers. So one zeros are zero. And you write one, one ones are one, zero, one ones are one, zero, one zeros are zero. Write opposite one, zero into zero. Write opposite one, zero ones are zero. Write opposite one ones are one. Write opposite zero, one zero to zero. Write one. One double zero, triple one zero one. Perfect. Perfect. And then what? Let's say the function length, calculate the length of a string x. Okay. Whatever the value of x is, whatever you have in x, the length would tell you
how many letters you have in it. For example, in X, if we have PAK, three letters is stored. It is a string. It is a string. The length always tells you the length of a string. X is a string park. The park contains how many letters? Three. It's going to tell you the number of letters that are there and would return numerical answer. Allow a line of write a pseudocode statements to do what? Allow a line of text to be input and output to an appropriate variable. Okay. Store this line to the file main text. Calculate the length of the line and output the text, the same text in the lowercase with its length, and store the lowercase line of text in a different file called lowercase. So you're dealing with two different files, and in both the file you are storing data, storing data. That means what should be the mode of the file? Will you open it in read mode or write mode? Right. Write mode, perfect. So the question is pretty simple. Examiner says first you input the line of text. Line of text, you keep the same variable in the exam. The line of text, line that you want to write, examiner always wants to see this variable line of text. And then lowercase text, this variable can be of your choice. Input the line of text, for example, what do you want to write there? For example, hi, comma, three letters. Open the file for the write mode. This file is the main file, .txt, and you're writing what in it? Write file meaning save. What do you wish to save? You want to save line of text. What do you have in line of text? Think that you have input. What have we input? We have input the word hi. ये हमने एंटर किया था hi. ये हमने इनपुट किया था hi. तो यहाँ पे लिख देगा hi. राइट हो जाएगा. कॉमन. फिर ये क्लोज कर देगा फाइल को, तो ये फाइल बंद हो गई. This file is going to be vanished away from the memory. Gone. इसमें से डेटा राइट हो गया, बस क्लोज हो गया फाइल. And then there was other requirement. And what was that? The other requirement was examiner said that you convert the text, line of text into lowercase. So it was hi like that, comma. It says L case. L case would convert this into small letter. And will store this data in a variable lowercase text. And output both the things. It will output this lower text. It would output this as well as the length of this. So the length of this is how much? It's 3. And then it's going to open up another file, lowertext.txt, a new file in a write mode. And the name of this file is lowercase.txt. Will open up in a write mode. Write mode meaning yes, you can save something in it if you want to. So write file is to save data. What do you want to save in it? We want to save in this file. In this file, save what? Save lowercase text. Lowercase text was this text that we had stored there. Hi and comma is going to be written here. And then we're closing this file and then close this file. Got it? Yes, so is it okay if we write output like after everything? Like at the end? Which line you want to swap? Tell me clearly. Output, can we write at the end? Like after Yeah. You can move it here. Because once the data has been stored in the variable, you can produce output anywhere you like. Okay. Okay. But remember the variable line of text. Oh, how many fields are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. 11 fields are there. How many records are there? We don't count this in the record. Record counting begins from this point. Why? Because that is called header.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 records are there. State the number of fields. 11 fields. Did we count 11? Yeah. State the number of records are 15. State the reason why the type field would not be suitable as the primary key. The type field. Why do you think this type field cannot be used as the primary key? Values are repeated. Because the type data has been repeated double game number of time in it. So this kind of data is never recommended for primary key. Primary key वो column होता है जहाँ पर unique data हो, double entries ना हो. Moving forward to database only uses these data type. Okay. And then you've got the database here. You have the example here. If I say suggest, which type out of these will you use for the room number? Alphanumeric. Right. Which one will you use for type? Alphanumeric. Got it. Right. Uh, guest. Integer. Right. Rate. Real. Right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, all have similar kind of data. What do you think what this should be? Boolean. All these should be Boolean. Got it? That's what examiner is asking you. सर ये कैरेक्टर हो सकता है जो था बेटा ट्यूसडे करेक्टर में फ्राइडे सिंगल करेक्टर होता है, सिंगल करेक्टर होता है करेक्टर में, सिंगल करेक्टर. अगर मंडे ट्यूसडे को आप करेक्टर में स्टोर करना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी हो सकता है, वरना बूलियन ज्यादा बेहतर है. वैसे यहाँ पे करेक्टर बूलियन में तो ट्रू एंड फॉल्स पूरा होगा तो वो बता सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि बूलियन है. देखते एग्जामिनर क्या एडवाइस कर रहे हैं इसके लिए. एग्जामिनर इज सेइंग बूलियन फॉर द बूलियन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. करेक्टर में वैसे सिंगल करेक्टर आता है, करेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जब भी ट्रू एंड फॉल्स हो या TNF हो तो आप उसको बूलियन एडवाइस करें. गॉट इट? और याद रखो ट्रू और रिमेंबर दिस, ट्रू हो फॉल्स हो या T और F हो, अगर बूलियन है तो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर बूलियन नहीं होता तो ये तो फिर स्ट्रिंग बन जाएगा, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, फिर ये स्ट्रिंग बन सकता है. अगर एग्जामिनर आपको बोलते हैं कि डू नॉट मेक इट अ बूलियन डेटा, मेक इट समथिंग एल्स, तो आपसे खुद पूछ रहा है व्हाट alternate data type would you select if you have to choose one. तो आप कह सकते हैं स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग में डोंट फॉरगेट टू राइट कोटेशंस. तो ये जो है, फिर अगर एग्जामिनर कहता है नो दिस शुड नॉट बी बूलियन, सजेस्ट एनी अदर डेटा टाइप दैट कैन आल्सो बी यूज्ड, तो फिर आप बोलो कैरेक्टर हो सकता है. और जब कैरेक्टर की बात होती है तो रिमेंबर उसमें सिंगल कोट लगता है, स्ट्रिंग में डबल कोटेशन लगता है, कैरेक्टर में सिंगल लगता है, और बूलियन में लगता ही नहीं है. नो कोटेशन, नो अपोस्ट्रोफी, नथिंग. बूलियन इज रिटन डायरेक्टली. समझ आ गई ये बात? जी सर आगे समझ. थैंक यू. ओके, आते हैं वापस इस टेबल पे. come back to this. यार वैसे बड़े आराम से आपसे पेपर होना चाहिए. देखो मैं तो समझाता हुआ इतना डिस्कस करता हुआ जा रहा हूँ तो 1 घंटा हुआ है और हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए. 15 मार्क का वो क्वेश्चन बाकी है, लेकिन वो अब बहुत तेजी से आप कर सकेंगे इंशाल्लाह. एग्जामिनर क्या चाहता है भाई इस सवाल में? गिव आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस.
आउटपुट बताना है उसको, क्या आउटपुट आएगा। रूम बुकिंग 28 फ्रॉम बुकिंग 28 क्या है, बुकिंग 28 तो टेबल का नाम है, ये बुकिंग 28 तो इस टेबल का नाम है, इस फाइल का नाम है, इस डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो वहां जो वो क्यूरी आपको दे रहा है, and that query examiner is saying what? Examiner is saying select room number, मतलब ये वाली फील्ड सेलेक्ट करो, टाइप ये सेलेक्ट करो, गेस्ट ये सेलेक्ट करो, रेट ये सेलेक्ट करो। फ्रॉम बुकिंग, तो बुकिंग का टेबल है इससे। वेयर मंडे इज नॉट इक्वल टू टी, कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने जहां मंडे टी नहीं है, यानी मंडे एफ है। तो मंडे के कॉलम ये वाला कॉलम है, मंडे के कॉलम में एफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब अब मैं साइड पे मार्क करता हूँ कि ये वाला रो आना चाहिए, ये वाली रो आनी चाहिए, दिस रो शुड कम, दिस रो शुड कम, दिस रो शुड कम। चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आंसर, अभी खाली इतनी बात समझ आई है कि मंडे नॉट इक्वल्स टू टी, ये मंडे टी नहीं है, वो ये रिकॉर्ड्स है। बात समझ आ गई है? Yes. Okay, examiner doesn't want all the data. Examiner says, just pick up the column where I've marked the tick sign. So that means examiner is not bothered about all this. अब आपने पहले ये मार्किंग कर ली सारी, तो ये डेटा एग्जामिनर को चाहिए जो मैंने रॉ मार्क किए हैं, बाकी डेटा नहीं चाहिए, तो ये निकाल दो। तो इस तरह से डेटा आएगा। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको पेपर में इस तरह से करना है। पहले हेडिंग डालनी है, ये कॉमा लगा सकते हैं आप हेडिंग के दरमियान इस तरह से, इसी तरह से आप डेटा में भी कॉमा लगाएं। और ये 5 रोज आपको दिखानी पड़ेंगी, रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है, बगैर कॉमा के भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा। ज्यादा बेहतर आंसर वही है कि आप हेडिंग के साथ और प्रॉपर तरीके से देते, कॉमा लगा के, तो इस तरह दे सकते हैं। इसको और ट्रिकी बनाऊं क्वेश्चन को, अगर मैं आगे लिख दूं ऑर्डर बाय रेट डॉलर DESC, इसका मतलब है सेम डेटा है, मगर अब इसका ऑर्डर जो है वो रेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। रेट को देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टा, द लार्जेस्ट नंबर शुड गो ऑन द टॉप, द लार्जेस्ट इज 700 शुड गो ऑन द टॉप। व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर आफ्टर दैट? 200. 200 should come after that, yeah, and then 160, 72.5, 72.5 में इसमें चॉइस है, कोई सा भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप, वो कोई भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो, doesn't make any difference. Got it? Yeah. Right. And then in the end we have this question, a question of 15 marks, और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता ही है आप इसको पढ़ना, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आपसे होना चाहिए। इसके स्केच दिखाता हूँ इसका मैं आपको। इसमें एक 1D एरे है हमारे पास रूम की, उसके इंडेक्सेस हैं 0 से लेकर 19 तक, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि देयर शुड बी 20 रूम्स। और फिर डायमेंशन है, ये एक 2D एरे है, और डायमेंशन के अंदर भी जो इंडेक्सेस हैं वो सेम ही है। ये रूम वाले इंडेक्सेस, सेम इंडेक्स यहाँ पे यूज किया है, सेम इंडेक्स,
हमें हेडिंग इंडेक्स ही डालना चाहिए। मैंने रूम इंडेक्स इसलिए डाला है कि आपको समझ आ सके कि रूम वाले इंडेक्सेस हैं, सेम इंडेक्स। यानी लिविंग रूम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लिविंग रूम की लेंथ है 5, इसकी विड्थ है 4 इन मीटर, और फिर इसका एरिया कितना होगा, हमने 5 इंटू 4 करना है, तो ये निकलेगा। इस तरह से हमें किचन का एरिया, फिर उसके बाद बेडरूम का निकालना है। फिर इस तरह हमारे पास 20 रूम्स हैं 0 to 19। फिर एग्जामिनर चाहता ही है कि इसके अंदर से आप लोवेस्ट निकालें, हाईएस्ट निकालें। तो अगर इन नंबर्स में से पूछूं हाईएस्ट कौन सा है, 30 है, तो 30 क्या है, इंडेक्स नंबर 4 है, तो इंडेक्स नंबर 4 कौन सा रूम है, इंडेक्स नंबर 4 जो है वो स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम जो है वो हाईएस्ट नंबर। इसमें लोवेस्ट कौन सा है, 7.25 है, 7.25 का इंडेक्स 3 है, और 3 का इंडेक्स बाथरूम है, तो बाथरूम जो है वो लोवेस्ट एरिया का है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वन डायमेंशनल एरे रूम्स, उसके बाद एक 2D एरे डायमेंशन जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और एरिया, तीन चीजें हैं। लेंथ, विड्थ एंड एरिया, लेंथ, विड्थ एंड एरिया। The position of any room's data is the same in both arrays. Position same and index is same. For example, the data in index 5 of dimension belongs to the room index number 5. यानी कि जो dimension index 5 है वो belong करती है room index 5 से। The variable number stores the number of rooms for which the data is to be input. कितने rooms का data आपको enter करना है? There must be at least 3 rooms, but not more than 20. तो कम से कम 3 rooms और ज्यादा से ज्यादा 20 rooms के लिए आपको बनाना है, प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम अलाउ करेगा आपको नंबर ऑफ रूम्स आर एंटर करें, एंटर करने के बाद स्टोर करें, वैलिडेट करें। तो इसका मतलब है जो रूम नंबर है वो 3 से 20 तक आने चाहिए, इस तरह वैलिडेट होगा। अलाउ द नेम ऑफ द रूम, उसके बाद ये 1D एरे में चला जाएगा नेम, फिर एक 2D एरे के अंदर लेंथ, विड्थ, और उसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। ये तीन चीजें जो है 2D एरे में जाएंगी। मल्टीप्लाई करना होगा विड्थ को और लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एरिया आ सके। कैलकुलेट करना एवरेज साइज ऑफ द रूम इन स्क्वायर मीटर राउंडेड विद 2 डेसिमल्स। फाइंड करना है लार्जेस्ट रूम, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट रूम, और आउटपुट करना है नेम ऑफ द रूम, नेम ऑफ ऑल द रूम विद द डायमेंशन। सारे रूम, सारे एरिया में प्रिंट कराना है। नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट रूम, और उसके बाद टोटल एरिया ऑफ हाउस एंड एवरेज रूम्स। अब इसके लिए ये एरेज जो चाहिए हमें, एक 1D एरे है, एक 2D एरे है। इसका फर्स्ट कॉलम लेंथ है, सेकंड कॉलम विड्थ है, और फिर एरिया कैलकुलेट होना है, जो मैंने आपको अभी पिक्चर भी दिखाया। लेंथ इनटू विड्थ करना है हमने। तो एरे के जो इंडेक्सेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो गए, ये 1 और फिर ये 2। ठीक है, ये इस तरह इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद आ जाते हैं इधर, डिक्लेरेशन हमने करनी नहीं थी, फिर भी मैंने दिखा दी है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब आप लार्जेस्ट लोवेस्ट निकालते हैं तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ रूम एंड स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ रूम, इसको आप इनिशियलाइज करें, लार्जेस्ट को स्मॉलर नंबर रख दें और स्मॉलेस्ट को बहुत लार्ज नंबर रख लें। उसके बाद आपने रूम नंबर इंटर करना है जो 3 से 20 के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि कम से कम रूम 3 और ज्यादा 20 होने हैं। तो इसको वैलिडेट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं रूम नंबर। इनपुट करने के बाद चेक करेंगे, अगर तो ये लेस देन 3 हो या फिर मोर देन 20 हो, तो इट शुड प्रोड्यूस एन एरर एंड टेक दैट एंट्री अगेन फ्रॉम यू। दोबारा से पूछे, फिर वो फिर से पूछता रहेगा जब तक आप रॉन्ग एंट्री करते रहेंगे। प्रोसीड जब ही करेगा जब आप सही डेटा एंटर करेंगे, और सही डेटा क्या होगा, 3 से लेकर 20 तक कोई सा भी नंबर आप एंटर करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर जब ये यहाँ पर आएगा तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू नंबर -1। नंबर -1 क्यों किया है, क्योंकि एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट आपको दी थी कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूम्स उसने कहा था नॉट मोर देन 20, नॉट मोर देन 20। तो मोर देन 20 नहीं है, तो 20 कैसे होंगे। अगर मैं लिखूं लूप चलाऊं 1 से लेकर 20 तक, या मैं चलाऊं 0 से लेकर नंबर, नंबर कितना रखा है मैंने, नंबर ऊपर हमारे पास होना चाहिए 19 समवेयर देयर। नंबर ऑफ रूम जितने भी हैं उससे हम एक माइनस कर रहे हैं। अगर आप 3 रूम्स की बात करें तो 3 - 1 2, क्यों कि पहला रूम नंबर हो जाएगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, तो इस तरह 3 पूरे हो जाएंगे। अगर आप 20 रूम्स की बात कर रहे हैं तो नंबर में ऊपर आप इनपुट करेंगे यहाँ पर 20, लेकिन जब वो नीचे आएगा लूप चलाने के लिए आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो नंबर -1 मतलब 0 से लेकर 19 तक,
तो ये 19 0 से लेके 19 पूरे बन जाते हैं कितने 20 रूम्स। तो 20 रूम्स का डेटा जब इंटर होने जा रहा है तो हम कह रहे हैं नेम इंटर करो। नेम इंटर करो ये करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा ये। नेम इंटर करो और नेम इंटर करने के बाद हम इसको इंटर करा रहे हैं रूम आई में। जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू 0 है तो पहला रूम नंबर इंटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पहला रूम नंबर। मान लेते हैं आपने पूरा 20 इंटर किया था, ये पूरा लूप चल रहा है 0 से लेके, तो अभी आई की वैल्यू 0 हुई है तो आपने लिविंग रूम इंटर किया। तो रूम जब आपने इंटर किया, जो भी आप इंटर करेंगे वो एरे में जाके स्टोर हो गया। फिर बोल रहे हैं इंटर द लेंथ, और इंटर जो आप लेंथ कर रहे हैं वो ये आउटपुट कह रहा है कि इंटर करो लेंथ, ये सब आपको देने की जरूरत नहीं है। ये इन मीटर्स अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, ताकि आउटपुट आएगा ये इंटर द लेंथ इन मीटर्स। फिर आप इनपुट करें डायमेंशन आई कॉमा 0। आई कॉमा 0 का मतलब है रो नंबर सेम है आई 0 और कॉलम नंबर 0 है। यहाँ पे कॉलम नंबर 0 पे क्या थी, लेंथ थी, तो ये लेंथ इनपुट हो रही है। 0 कॉलम में लेंथ है और यहाँ पर माइनर सा चेंज है। फिर जब हम विद एंटर करने जा रहे हैं, विद एंटर करने जा रहे हैं इन मीटर्स, आउटपुट किया एंटर द विद इन मीटर्स, और फिर डायमेंशन आई कॉमा 1 पे हम जो है विद एंटर कर रहे हैं आई कॉमा 1। तो आई अभी 0 ही है, उसकी विद एंटर की हमने। अब हमें ये डायमेंशन वाली एरे, डायमेंशन आई कॉमा 0 और डायमेंशन आई कॉमा 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन आई कॉमा 2 यानी एरिया। ये काम अब हम करने जा रहे हैं कि डायमेंशन आई कॉमा 2 ये एरिया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन आई कॉमा 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायमेंशन आई कॉमा 1 से, यानी लेंथ इनटू विड्थ, और जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा उसको हम राउंड कर रहे हैं कॉमा 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जा रहे हैं इसको। उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन आई है इसको हम टोटल में ऐड करते जा रहे हैं डायमेंशन आई कॉमा 2, यानी कि तमाम डायमेंशन का टोटल होता रहेगा। तमाम डायमेंशन का टोटल का मतलब ये है कि ये सारी इन सब का टोटल होता जाएगा। जैसे जैसे डायमेंशन आती जाएंगी टोटल हो रहा है, और ये टोटल कहाँ हो रहा है, ये टोटल होता जाएगा टोटल एरिया में। उसके बाद हमें लार्जेस्ट निकालना है। अब लार्जेस्ट हमें किसमें से निकालना है, इसमें से देखना है कौन सा लार्जेस्ट है। तो ये कौन सा कॉलम नंबर है 2, एरे कौन सा है डायमेंशन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ डायमेंशन आई कॉमा 2, अगर तो ये डायमेंशन की वैल्यू बड़ी है किससे, लार्जेस्ट रूम से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डायमेंशन आई कॉमा 2 की जो पहली वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। क्या ये बड़ी है लार्जेस्ट रूम से, लार्जेस्ट रूम ऊपर मैंने -1 रखा हुआ था, तो 20 बड़ा है -1 से, कंडीशन इज ट्रू। उस केस में क्या होना चाहिए, डायमेंशन आई कॉमा 2 मतलब ये जो लार्जेस्ट नंबर है 20 जाके स्टोर होना चाहिए लार्जेस्ट रूम एरिया में, और इस वक्त जो आई की वैल्यू है इंडेक्स, उसको हम स्टोर करा रहे हैं लार्जेस्ट रूम्स में इंडेक्स में। अगर ये वैल्यू हमारी लार्जेस्ट हो गई है तो हमारे लिए ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हम इस इंडेक्स को स्टोर करा रहे हैं, इस इंडेक्स को हम स्टोर करा रहे हैं लार्जेस्ट इंडेक्स के तौर पे, क्योंकि ये इंडेक्स स्टोर करेंगे तो इसी से नेम निकाल सकते हैं हम, फिर उसी सेम इंडेक्स से हम नेम निकाल सकते हैं। हमें लिखना पड़ेगा रूम और लार्जेस्ट इंडेक्स, और रूम वो निकल के आ जाएगा। तो ये लूप के अंदर चल रहा है तो ये काम होता रहेगा, पहली वैल्यू पे फिर दूसरी वैल्यू पे सबको कंपेयर करता हुआ जाएगा इस तरह से, और कंपेयर करने के साथ साथ लार्जेस्ट रूम इंडेक्स आपके पास निकाल के ले आएगा। इसी तरह ये स्मॉलेस्ट काम करेगा, इसका ऑपोजिट है स्मॉलेस्ट। और जब लूप के बाहर आएगा तो फिर ये एरिया निकाल रहे हैं और एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कैसे, टोटल को डिवाइड कर रहे हैं नंबर से, जितने भी नंबर है उसको माइनस उसको 2 राउंड कर रहे हैं, और एवरेज निकालने के बाद आउटपुट करेगा तमाम डिटेल्स, तमाम रूम की लेंथ को, तमाम रूम की विड्थ को, तमाम रूम के एरिया को, इस सब को आउटपुट करेगा। और सबको आउटपुट करने के बाद फिर ये लार्जेस्ट रूम को आउटपुट करेगा, और फिर ये स्मॉलेस्ट रूम को आउटपुट करेगा, और उसके साथ नेम भी दिखाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं रूम लार्जेस्ट रूम, तो रूम लार्जेस्ट रूम इंडेक्स, तो रूम इंडेक्स अगर हमने ये निकाला था तो इसमें रूम 0 उसी इंडेक्स से ये उठा के ला रहा है, इसका रूम नंबर रूम नेम उठा के ला रहा है, यानी ये वैल्यू भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, दोनों चीजें हमें चाहिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है रूम्स के एरे से उठा के ला रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है इसकी डायमेंशन जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो, यानी सेकंड कॉलम की जो वैल्यू थी, सेकंड कॉलम की यानी ये वैल्यू जो थी सेकंड कॉलम की वैल्यू, ये जो वैल्यू, अगर ये लार्जेस्ट है तो ये वैल्यू भी दिखाएगा, यानी रूम भी दिखा रहा है
और उसकी लार्जेस्ट वैल्यू भी दिखाएगा। इसी तरह जब स्मॉलेस्ट रूम की बात होगी तो रूम भी दिखाएगा और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी दिखाएगा, और फिर इस तरह टोटल को राउंड करके आउटपुट करेगा, एवरेज को भी आउटपुट करेगा। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर होता है कंप्लीट। मैं आपको इसकी एक स्मॉल पिक्चर दे देता हूँ बना के, ताकि पूरा एक ही इस पिक्चर पे आ जाए। काफी स्मॉल हो गया ये, लेकिन आई थिंक ये जब पिक्चर फॉर्म में होगा तो आप इसको इनलार्ज कर सकेंगे, स्ट्रेच कर सकेंगे। ऑलमोस्ट एक जैसे ही सवाल दे रहा है एग्जामिनर। इंडेक्स सेम रखने वाले क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, और ये भी कुछ ऐसा ही था। चलें, ऑल डन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये मेरी लास्ट क्लास थी यहाँ पर। अब आपके बाद नेक्स्ट वीक से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आप गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके।